Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, myself Professor Uday Bhokre. Now I am welcoming you on your own YouTube channel Ekeeda. Hope you are watching our videos regularly. Keep watching, keep sharing. Friends, today we are going to learn for CA Intercourse Accountancy subject single entry topic question number 6. Let's read the question, students. From the following data, you are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2017 and balance sheet on that date. तो as usual final account बनाने को बोला है. All the working should form the part of your answer that we know. Creditors 15,770, it is on 1st April 16. So I can say this is the opening data and this is the closing data. ठीक है, तो रिस्पेक्टिव बैलेंस शीट में आएगा as a opening balance and as a closing balance. Sundry expenses outstanding. So these are the outstanding expenses 600 and 330. Importantly, outstanding expenses के बारे में याद रखना. Current year's outstanding expenses will be added to the respective expense and last year outstanding expenses to the extent paid will be subtracted. Unless otherwise given, last year all expenses are paid. So what I want to say कि last year का 600 I will minus and current year का 330 I will add to the expenses. Let me search out where are the expenses they have given you. They have given you expenses paid here. So here I need to add the closing figure of 330 and I need to minus opening figure of 600 unless they mention that okay, some different amount is outstanding. ठीक है, तो I have to just adjust it. Sundry assets are given. Inventories in trade मतलब ये आपका स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. कैश इन एंड एट बैंक, आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है. सो आई विल ओपन अ कैश और बैंक अकाउंट. Trade debtors, I will open debtors account. Also, I will also open this creditors account by default. Details relating to the transactions during the year. These are the transactions during the year. Cash and discount are credited to debtors, means we have allowed the discount. Sales return, bad debts, sales, cash and credit both, they have given you total sales, so please be very careful. उन्होंने cash sales, credit sales एक single figure दिया हुआ है. Discount allowed by trade creditors, so we will get the discount. Purchase return, additional capital paid into a bank, additional capital paid into bank. So अपने लिए नॉर्मल एंट्री है बिकॉज अपने लिए कैश एंड बैंक ये एक ही अकाउंट है. रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू अ बैंक, तो डेटर्स का अमाउंट जो बैंक में जमा किया है वो दिया हुआ है. कैश परचेसेस आर गिवन, कैश एक्सपेंस आर गिवन. पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेस 430, कैश पेड इनटू बैंक, कैश ड्रॉन फ्रॉम द बैंक, cash in and on 31st March 17, checks issued to the trade creditors. Now while going through this question, we can definitely imagine that they have given you clear cut bifurcation between cash and check transactions. So I wish that you have to prepare separate column for cash and bank if at all breakup is available for the bank. बिकॉज यहाँ पे हमारे लिए चेक भी क्या हो जाएगा, कैश. हम लोग को बाइफरकेट करना तो पड़ेगा लेकिन ऐसा कोई डिटेल दिया हुआ नहीं है, तो आई एम कंपेल्ड टू यूज कैश एंड बैंक अकाउंट. ठीक है, फॉर दिस दैट मीन्स ओनली थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट के बिसाइड चेक देयर कैन बी अ कैश. सो वी विल वेट फॉर दैट. Let us prepare the various accounts now. Firstly, I need to prepare trading account, P&L account and balance sheet, and then the respective account we will prepare. Students, as I said in my all lectures, whenever you are doing single entry question, firstly complete your opening balances, then you will go with the transactions during the year, then go with the transactions at the end of the year. Follow the chronological order, follow the date order. ठीक है, तो what we are doing right now, we are recording opening balances in the opening statement of affairs. ठीक है, तो let's do that.
See, while writing this balance sheet, debtors is question mark. We don't know what is the amount of debtors, so that we will derive when we open debtors account. Now, first work what I have is to post all these amounts at the respective places in the current year. Firstly, I will go with the asset side. So students, we are writing sundry assets. Sundry asset आप check करो. In last year it was 11,610 and current year it has become 12,040. So I can say there is a purchase of asset. How I will get the new asset? चेक करो, मेरे पास ओपनिंग में असेट था 11,610, क्लोजिंग में है 12,040. सो डेफिनेटली जो इंक्रीज हुआ ये परचेस का ही होगा. इंपॉर्टेंटली दिस आई विल क्रेडिट टू कैश और बैंक अकाउंट. तो मुझे कैश और बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा अभी. स्टूडेंट्स, फॉर मी इट इज कैश एंड बैंक अकाउंट. ये कंबाइन अकाउंट है, तो मेरे लिए चेक भी कैश के जैसे ही हो गया, ठीक है ना. बट सिर्फ मैं मेंशन करूंगा मुझे चेक मिला है, ठीक है. सो यू बी केयरफुल, ये मेरा कैश अकाउंट भी है और ये मेरा बैंक अकाउंट भी है. ओपनिंग बैलेंस मैंने लिख दिया है. अभी मैं मेरे क्वेश्चन में आ जाता हूं. यहाँ पे मैंने न्यू असेट परचेस करके दिया है, तो वी मस्ट हैव पेड मनी फॉर दैट. सो आई एम राइटिंग हियर बाय सन्ड्री असेट. ठीक है. नेक्स्ट amount here is inventory. This inventory I will record in your trading account. तो मैंने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया. अभी नेक्स्ट अमाउंट लास्ट बैलेंस शीट में जो था वो कैश एंड बैंक दैट वी हैव रिटन. डेटर्स वी डोंट नो व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस, बट वी विल स्टिल प्रिपेयर द अकाउंट. क्वेश्चन हैज नॉट प्रोवाइडेड दिस अमाउंट, सो वी नीड टू डिराइव समहाउ. ये अमाउंट आना चाहिए. नेक्स्ट लास्ट बैलेंस शीट में और क्या दिया था स्टूडेंट्स, और आपको दिया था क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड पे. तो आई विल प्रिपेयर फोर्थ वर्किंग नोट दैट इज फॉर क्रेडिटर्स. So we have recorded creditors also. Now let us go with the next amount. Outstanding expenses are given. So be careful. Expenses का हम लोग अकाउंट नहीं बनाएंगे. We will adjust directly in profit and loss. I am writing here two expenses. Paid. ये आपको दिया है, देखो expenses paid 9570. एक्सपेंसेस पेड 9570 दिया हुआ है, तो आई एम नोटिंग इट डाउन. और अगर आपने पे किया है तो कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय एक्सपेंसेस. अभी इसके साथ हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा. याद रखना, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग फिगर हम लोगों ने करंट ईयर में पे किया होगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 600 और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐड करेंगे. जरा चेक करो आपके क्वेश्चन में, ये रहा क्वेश्चन आपका. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ द ईयर कितना दिया स्टूडेंट, 330. तो आई एम टेकिंग इट. current year outstanding is your current year's liability. Next, last year balance sheet, all data we have recorded.
Now we have to go for a transaction during the year. They have given you cash and discount credited to debtors. कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिट टू डेटर्स, टोटल कैश एंड डिस्काउंट दोनों डेटर्स में इतना क्रेडिट किया है. अभी मुझे ये नहीं पता इसमें से कैश कितना और इसमें से डिस्काउंट कितना है, तो मैं इसके लिए वेट करूंगा. कैश एंड डिस्काउंट कितना है वो मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों का टोटल कितना है 64,000. सो लेट मी नोट डाउन समवेयर. डेटर्स अकाउंट में ही मैं लिख देता हूं यहाँ पे. I don't know how much is cash and I don't know how much is discount, but I know that total amount of cash and discount is 64,000. ठीक है, तो 64,000 I am noting it down. I will come to this figure later on. Next, sales return. I can say minus from sales, right? So I am noting it down. By sales, we have a cash sales and we have a credit sales. From that you will say minus return. By the way, इसका टोटल आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में. कैश एंड क्रेडिट सेल्स का टोटल आपको दिया हुआ है 71,810. And from that I am minusing sales return, which is 1450. Sales return also will be credited to your debtors account. $1450. Then they have given you bad debts 420. PN account will be debited and debtors account will be credited. Next amount, discount allowed by, they have given you cash and credit sale that we have taken 71,810. They have already given and we have already recorded. Purchase return is given, and before that discount allowed by trade creditors is 700. Discount allowed by trade creditors is 700. मतलब कहने से we have received the discount. Discount received we will also debit to our creditors account. After discount received, we are having purchase return. It is minus from purchases, and we will also debit to our creditors account. Next, additional capital paid into a bank 8,500. For me it is nothing but additional capital brought in, right? So it doesn't matter. आपको कैश जो बैंक में जमा किया वो एंट्री आपको अलग से दिखाने का जरूरत नहीं, because for me cash and bank both are same. So here I am writing. On liability side also I will add, आपका ओपनिंग कैपिटल लिखने के लिए मैं जगह रख रहा हूँ, तो उसको मैं ऐड कर रहा हूं एडिशनल कैपिटल. ठीक है. नेक्स्ट, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक. Realization from debtors paid into bank 62,500. That means cash received from debtors. So I can say cash account debit to debtors 62,500. यहाँ पे आप चेक करोगे, आपने कैश एंड डिस्काउंट के लिए ऑलरेडी जगह छोड़ा था. कैश आपका है 62,500. So can't I say discount allowed to debtors will be 1,500. So this I will debit to P&L. Next, cash purchases are given 1030.
ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में मैं लिख देता हूँ 1030 एंड इन माय कैश अकाउंट बाय कैश परचेसेस। नेक्स्ट थिंग कैश एक्सपेंसेस, दिस वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड। पेड बाय चेक फॉर मशीनरी परचेज 430, तो ये आपने 430 जो मशीनरी परचेज किया था उसका ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है, तो वापस रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हाउसहोल्ड एक्सपेंसेस पेड फ्रॉम द बैंक मींस इट इज ड्रॉइंग, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे बाय ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे कैपिटल में से। Cash paid into bank and cash drawn from the bank, I suggest you can ignore these two transactions for the simple reason we have prepared combined cash and bank account, तो अपना cash account भी वही है, bank account भी वही है, we don't have a separation as such, तो I will say cash account debit to bank account बोलो या bank account debit to cash account बोलो, one and same, so this will not be considered in my calculation anywhere right now. Cash in and closing is given 1200. This cash balance I will note down in the balance sheet. One thing I like to mention here, यहाँ पे चेक करो, आपको कैश एंड बैंक बैलेंस 8080 दिया है, जिसमें से 1200 कैश है, तो बाकी का चेक मतलब बैंक। And this closing bank balance I am also writing in my cash and bank account. बैंक बैलेंस 6880, ठीक है, वी आर नोटेड इट। सो कांट आई से मैंने क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस भी कंसीडर कर लिया। चेक्स इश्यूड टू अ ट्रेडर, ट्रेड क्रेडिटर्स 60,270, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। So we have noted down that also. So we have recorded all transactions which took place during the period. अभी मैं मेरे क्लोजिंग बैलेंसेस की तरफ आ रहा हूँ स्टूडेंट्स। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 12,400, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू बैलेंस कैरिड डाउन, और वही क्लोजिंग क्रेडिटर्स में बैलेंस शीट में लायबिलिटी में भी लिखूंगा। So we have done creditors, sundry assets we have taken up, expenses we have taken up, cash and bank balance we have taken up, inventory in trade, closing stock 11,120 I will note down. It is your asset also. Trade debtors 17,870, तो debtors account में closing balance, बैलेंस शीट के एसेट में भी आएगा। Now it is time for us to consider closing because we have recorded everything which is given in the question explicitly. तो जो भी आपका बाकी का फिगर्स डेराइवेशन है वो अभी शुरू होगा, ठीक है, तो विल गो वेरी स्लोली। इफ यू लुक एट द वर्किंग नोट, हमारे पास डेटर्स भी मिसिंग है और हमारा यहाँ पे कैपिटल होता है, वो कैपिटल भी मिसिंग है। दैट वी बिलीव कि इट मस्ट बी आवर क्लोजिंग बैलेंस और आई कैन से बैलेंसिंग फिगर। तो पहले मुझे डेटर्स के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट आर माय क्रेडिट सेल्स। अभी क्रेडिट सेल्स के लिए क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है एक्सेप्ट वन सिंगल वर्ड दे हैव गिवन यू, कैश एंड क्रेडिट सेल्स, जो हम लोगों ने ऑलरेडी नोट डाउन किया है 71,810। तो आई नो टोटल सेल्स आर 71,810 बट आई डोंट नो व्हाट इज ब्रेकअप। तो क्रेडिट सेल्स निकालने के लिए मेरे पास और कोई चारा है नहीं,
तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मेरा कैश अकाउंट क्लोज कर देता हूं। तो मेरा कैश अकाउंट में क्लोज कर दूंगा तो आई विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ मच इज एक्स्ट्रा कैश इज देयर व्हिच कैन बी माय कैश सेल्स। आई एम जस्ट टेकिंग टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एंड आई विल गेट सम डिफरेंस हियर which is expected to be my cash sales. Let's see. This must be my cash sales. $4,600. So this I will note down here. This is as per my working note. Number 2. So if I know what are my cash sales, I will be able to find out what are my credit sales because total sale मुझे पता है 67,210. It will be debited to your debtors. And once you close your debtors, on debit side here you will get one balancing figure, that is the opening balance of the debtors. So let me close the account. So your opening debtors are 16,530. These debtors whatever I have calculated I will note down here in last statement of affairs 16,530. Now I can easily close my last year statement of affairs to get the capital. This is my opening capital which I will note down in my balance sheet, current year's opening balance sheet capital. Let us close creditors account now. Creditors account, on credit side there is a balancing figure. Can't I say my creditors are increasing? मेरे creditors क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, बढ़ रहे हैं, तो it must be my credit purchases. So I am noting it down by credit purchases. और ये मैं ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट भी क्लोज कर दिया। So all my working notes are done. Now I need to close my trading P&L and balance sheet. That's it. 81,480. 14,810 is your GP. ठीक है, अभी हम लोग ये अकाउंट क्लोज करेंगे और मुझे यहाँ पे डिफरेंस जो मिलेगा वो मेरा नेट प्रॉफिट होगा। दिस इज आवर नेट प्रॉफिट। Transfer to capital. So I will add it to the capital. So your balance sheet tallies at 49,110. Students, this easy question you must have understood. Then too, if once again if there are some doubts, my suggestion would be you please go through the session again. एक बार वीडियो वापस देख लेना, कोई डिफिकल्टी नहीं है आपको उसके लिए, अभी आप देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट बनता है तो प्लीज पुट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल लाइक टू रिजॉल्व योर क्वेरीज एट अर्लिएस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल. कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग. थैंक यू.